Now, as the farmers continue their agitation against the three farm laws, the opposition is rallying behind them. A delegation of 5 opposition leaders, including Rahul Gandhi, Sharad Pawar, Sitaram Yechury, are going to be meeting President Ramnath Kovind at 5 p.m. today. Sources say that the opposition leaders will tell President Kovind that they support the farmers' demand to repeal the laws, as it not only affects the farmers but the entire agriculture and food security system as well. Sources have also added that opposition will seek President's intervention and ask him to convince the central government in not being rigid. Before meeting with the President, the opposition leaders are going to be holding a meeting amongst themselves at 4 p.m. to discuss the strategy going forward. Rahul has meanwhile hit out at the government ahead of this meeting. Meanwhile, the Modi government has slammed the opposition for their alleged double standards with regard to farm sector reforms. Referring to a 2010 letter, BJP has claimed that NCP chief Sharad Pawar asked the states to amend APMC Act to encourage participation of the private sector. आनंद फानन में कानून बना दिए गए, अगर सेलेक्ट कमेटी भेज देते इसको, वहाँ भी मेजोरिटी सत्तापक्ष की होती है। और मान लो तमाम लोग मिलकर बातचीत करते, किसान नेताओं से बात करती कमेटी, उसके बाद में रिकमेंडेशन आती पार्लियामेंट के अंदर और फिर पास होता तो नौबत नहीं आती। अब भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि किसानों की भावनाओं का सम्मान करे, उनको बुला के प्यार से बात करे और रास्ता निकाले जिससे कि वापस शांति कायम हो सके। ये मिल तो अवश्य रहे हैं, लेकिन प्रयास तो यही होना चाहिए कि सरकार को ये क्वेश्चन करें, उनको परामर्श दें कि इसको पुनर्विचार करें। लेकिन सरकार जिस तरह से जिद पकड़े हुए है तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो सरकार ही जाने। More than 20 parties or even more have extended their support to the struggle of the Kisans. Because of the COVID restrictions and protocol, there is a restriction on the number of people that can meet Honorable President. So we've requested the Rashtrapati Bhavan to increase the number. It's a good thing that the opposition are meeting the President on the farmers' bill. The farmers have been on an agitation this time for 13 days. Farmers want total withdrawal of the farm bills, which the government has not agreed to. So President is a higher court of appeal, so the opposition will go and meet the President. ರೈತ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ಏನಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वो सब इनका अधिकार है, वो सब इनका अधिकार है और उस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी सबके राष्ट्रपति हैं, किसी सरकार या पार्टी के तो है नहीं, तो ये सब नियम अनुसार उनसे मिल सकते हैं। लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और अनैतिकता से नैतिकता का रास्ता दिखाए और सब लोगों को नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए देश हित में, किसानों के हित में जो नियम कानून बन रहे हैं उसका पालन करने की व्यवस्था बने। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.